Assalamu alaikum student. I am your physics teacher from Divisional Model College, Faisalabad. Class 8th. Yesterday we are talking we were talking about the we have yeah I delivered you the introductory lecture about physics, and we learned about what is physics, and at the start of the beginning of this universe when the scientist proved many things. So you know that the knowledge which we gained about, I am just taking you the review from the previous lecture. The knowledge which we gained through experiments and observation is called the science. Sciences come from the Latin word which is called the scientia, and in earlier stages, this will be collectively known as the natural philosophy. Further on, it is divided into the two branches, biological sciences and physical sciences. Physical sciences, we are talking about the non-living things subjects, and the biological sciences, we are talking about the living things like animals, plants, structure, and your own human body. What is physics? Further, when the inventions are proceed, then physical sciences have main five disciplines, which is chemistry, geology, meteorology, astronomy, but most of one is physics. Measurements are not a confined science, but they are play very important role in our daily life. In physical sciences, we are talking about the energy matter interaction under the proved principles of physics by the different scientists at different times. In the 19th century, as the science have done many inventions which made our life is easier, these inventions are very helpful, like your washing machines, spinner, your telephone sets, your Android sets, your PCs, your laptops, your audio recorder, the anything which you can easy make your life easy, make your life easy. This is called the inventions, and this is called the science, which we are gained through many experiments. Now, today's our topic is about the physical quantities. If we are talking about simple physical, so then the term which you can only touch and feel, this is called the physical. But physical mean in the term in the uh, term of physics. So then physical quantity means which can be measured. The quantity which can be measured, this is called the physical quantities. If, for example, the quantities of physical example length, mass, time, temperature, electric current, light intensity, volume, and many others. There are some examples. If you want to physical quantities always measured of natural non-living objects. मीन कि आप किसी भी चीज को जब मेजर करते हो वो कोई लिविंग थिंग नहीं होती, मतलब अगर आपकी हाइट है तो वो कोई एक जिंदा ऑब्जेक्ट नहीं है, वो नॉन लिविंग थिंग है जो आपकी हाइट है, आपका वेट है, आपका कवरिंग डिस्टेंस है थ्रू योर व्हीकल, थ्रू योर ऑन फूड, so then these are all naturally exist non-living thing objects. ठीक. Physical quantities have numeric values, which you known as the magnitude and its unit also. If you want to measure the height of yourself and your friend, so then your height in the centimeter scale is 104 centimeter. So 104 is the magnitude or numeric value, and centimeter is unit. Because without the unit, the 104 has nothing, doesn't have nothing meaning, and centimeter, if you just about the height is centimeter, so centimeter itself has nothing, doesn't mean. ठीक, बोथ आर कंपल्सरी. कंपल्सरी कि अगर आपने किसी चीज की हाइट बतानी है, वेट बताना है, कोई अमाउंट आपने कोई परचेज करनी है, तो देन न्यूमेरिक उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू और उसका यूनिट जो है वो कंपल्सरी है. Physical quantities. The another example of physical quantity is that when a grocery says that each sugar bag contains 5 kg, he is describing its numerical magnitude as well as the unit of measurement. When you go to the some grocery shop or some big general store to buy something, for example, you want to buy the sugar or want to buy some fruit for yourself, so then you can say, okay, there you are seeing that they are packaging of some different amount. ठीक, for your convenience कि वहां पे 5 kg 10 kg 2 kg की पैकेजिंग हुई होती है, तो जो 2 है वो आपकी ये 5 kg शुगर है, तो देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर शॉपकीपर कि व्हाट यू वांट, वो आपके लिए हेल्पफुल है कि आप क्या चाह रहे हो. अगर आप यू कैन से ओनली अबाउट द केजी, तो देन द शॉपकीपर डजंट अंडरस्टैंड कि व्हाट यू वांट टू परचेज. ओके, yeah, when you say about the I want to 5 sugar, so then shopkeeper also doesn't understand what you want to say, but you are completely say in the complete sense, I want to 5 kg sugar, 2 kg sugar, 2 dozen egg, yeah, 5 kg mangoes, so then it will be very helpful to the shopkeeper, yeah, required person to understand what you want to buy. It would be meaningless to share state 5 or kg only.
Physical quantities have further two branches, have further two types, which first one is base quantities and second one is derived quantities. Now we are talking about the base quantities, the quantities which we derive the other quantities on the basis of itself. This is called the base quantities. They are total in 7 and it is standardly proved and mentioned in the SI unit system. The quantity which include the length, mass, temperature, intensity and amount of substance is called base quantity. These are total in 7 और all remaining quantities are derived on these base quantities. जितनी भी आप आगे quantities हम पढ़ेंगे, for example, if you are talking about the measure the area of a some room, some place या volume, तो then आप हाइट जो लेंथ है हमारी उसको हम मीटर में मेजर करते हैं. दिस आर बेस क्वांटिटीज. अगर आप दो साइड्स की इफ यू टेकिंग अबाउट द लेंथ ऑफ टू साइड्स एंड वांट टू measure the area of a square, so then you know the formula of area of a square. The length into length is called the area of a square. If I give you the length of one side of a square is 10 meter, so length is the base quantities. Okay, now you calculate the value of area of some place. This is the derived quantities which we are derived on the basis of these base quantities. Derived quantities are the quantities which are expressed in terms of base quantities. Same thing, those quantities which are derived on the basis of base quantities. जो base quantities से आपको help से मिलती हैं वो आपकी क्या है? Derived quantities होती हैं. इसमें आपका area, volume, speed, work, energy, power, electric charge. These are some examples, but derived quantities are greater in number. Base are total in 7, but derived quantities are more than 7 quantities. I am giving the example of area. If you want to calculate the or volume of the some place, so you can use the base quantities, which is length, height, and width, which all measure in meter scale. The SI unit is of length is meter. So then you can multiply length, breadth, or height. You can attain the volume of that cubic. ठीक, क्लियर. तो देन वॉल्यूम का यूनिट क्या बन गया? मीटर क्यूब. क्लियर. तो और एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर. तो मीटर क्यूब एंड मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? दिस आर द ड्राइव क्वांटिटीज व्हिच वी आर ड्राइविंग ऑन द बेस ऑफ बेस क्वांटिटीज. और कौन सी बेस क्वांटिटी हमने यूज की है? लेंथ. ठीक है. एसआई यूनिट क्या होता है? SI unit is the abbreviation of International System of Units. Clear? What is unit? This is the definition of unit. Students must keep your mind. Same through these slides you can headings on your book by following these slides. ये तमाम स्लाइड्स जो हैं आपकी बिल्कुल बुक पे जो लिखा हुआ है उसको सामने रखते हुए मैंने बनाई हैं. देन आप लोगों ने जहां जहां पे ये डेफिनेशन और हेडिंग्स एड अप है आपने वहां वहां पॉइंट्स मस्ट बी नोट डाउन ऑन योर बुक्स. What is unit? Once a standard is set for quantity that it can be expressed in term of that standard quantity, this standard quantity is called unit. यानी कि जो quantity base quantity एक ऐसे unit system एक international 11th जनरल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वेट एंड मेजरमेंट पे 1960 में पेरिस पे हुई थी. वहां पे इस बात की जरूरत को समझा जाता था कि कोई ऐसा सिस्टम हो कि अगर आप कोई चीज लेने जाएं तो देन आपको वहां पर उसकी अमाउंट बताने में आसानी हो. अमाउंट के साथ एक न्यूमेरिक वैल्यू के साथ एक यूनिट भी होना जरूरी है जो कि हेल्पफुल होता है लेने वाले को भी और सोल्ड आउट करने वाले को भी कि इनको इतनी चीज इतनी अमाउंट में चाहिए. तो एक जरूरी था एक ऐसा सिस्टम बना होना कि आप मैग्नीट्यूड न्यूमेरिक वैल्यू के साथ उसका साथ यूनिट लगाएंगे. अगर आप जाके एक शॉप पे जाते हैं आपको वहां पे एक्स बाय कर रहे हैं तो देन आप सिंपल कहें मुझे एक 1 डजन आई वांट टू बाय 1 डजन एग. अगर आप व्हेन यू आर से सिंपली आई वांट टू 1 egg, it doesn't convey your meaning clearly. So if you add up its unit कंबाइन अगर आप उसके साथ उसका यूनिट लगा देते हैं डजन तो इट विल कन्वीनियंट फॉर शॉपकीपर और योरसेल्फ आल्सो. तो देन इन 1911 जनरल कॉन्फ्रेंस में इस बात को किया कि कैसे यूनिट सिस्टम बनाया जाए जो आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ उसके यूनिट को भी साथ अटैच करें. तो सिंपली अब जैसे मैंने हम लोगों ने वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस स्लाइड कि आप अगर एरिया मेजर करते हैं तो बेस यूनिट क्या है? बेस आपके पास क्वांटिटी क्या है? जो फिजिकल क्वांटिटी के टाइप है वो क्या है आपके पास? लेंथ है, जिसको आप लोग उसका एसआई यूनिट जो था और लेंथ जो है बेस क्वांटिटी है. और बेस यूनिट क्या होगा? जो लेंथ का जो यूनिट है वो क्या है? बेस यूनिट है. और उसका यूनिट क्या है? लेंथ. हमेशा जो एसआई यूनिट है मीटर में मेजर करते हैं. बाद में उसकी फर्दर कन्वर्जन होती है, आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, फीट्स में मेजर कर लें, इंचेस में मेजर कर लें. Base unit and derived quantities. The base quantities, the SI unit contains base units and derived quantities.
अब बेस क्वांटिटीज क्या होंगी? जो बेस क्वांटिटी के साथ जो उसके यूनिट लगते हैं वो बेस यूनिट्स कहलाते हैं, और जो ड्राइव क्वांटिटीज के साथ जो यूनिट लगते हैं उसके ड्राइव यूनिट्स कहलाते हैं। अब बेस क्वांटिटीज वी आर टॉकिंग अबाउट, यू नो कि बेस क्वांटिटीज आर टोटल इन 7: लेंथ, mass, temperature, time. Length as a unit is meter and its symbolic representation is m. Mass unit is kilogram and its symbolic representation is kg. Temperature unit is Kelvin and its symbolic representation K. But we can also measure the temperature in the centigrade scale, Fahrenheit scale. This is all the drive scales, but basic unit and scale is temperature. The temperature is base quantity and this is the base unit. Clear? Time is measured in the second. This is the SI unit of time. Second, but we can also measure the time in hours and minutes. This are the hour and minutes are the drive quantity of drive units. Amount of substance, mole. Electric current can be measured in the ampere and denoted by the A. And this is the intensity candela and represented by the CD. Base quantity and drive units. Drive units कौन कौन से हैं? Drive units are the units used to measure the drive quantities. वो units जो आपकी drive quantities को measure करने के लिए use होते हैं, जैसे कि आपका area है, आपका volume है, then force है, pressure, energy. These are some examples. These are called the drive units. Volume जो है आपका लीटर में measure होता है, force न्यूटन में, pressure पास्कल में, because first of all the Pascal discovered the pressure concept. So pressure unit is on the name of Pascal. This is the scientist name. Energy, joule, represented by the J. I hope you will understand about the physical quantity, and further its two types: base quantity and drive quantities. The base quantities which we can drive the other quantities on the basis of itself, it is called the drive quantities. Drive quantities which are drive on the basis of base quantities are called the drive quantities, and base quantities units are known as the base unit. Drive quantities units is known as the drive units. Now we are talking about the what is SI prefixes. Prefixes are the word and letter which we add to the beginning of a word to make a new word. Clear? When some word is added before a letter or a word to make a new word, new meaning, this is called the SI prefixes. This is the simple meaning of prefixes. When we are talking about in the physics term, so then prefixes mean if you have, if you convert your answer in the terms of multiples or some multiples, these are called the prefixes. Now, first of all, we are talking the common example. If you have the word happy, which means is push hona, okay. If you add some prefixes un or not, when you add word term and not, this make a new word: unhappy, na खुश, not happy, okay. Table of prefixes कौन कौन से हैं? टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टर, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो. These are the prefixes table. When your values are larger, so then you convert into its symbol. It will give you a shortest answer. For example, अगर आपके पास आंसर ये है तो आप लोग repeatedly इस जीरो को लिखने के बजाय अगर आप इस जीरो को काउंट करें, और ये प्रीफिक्सेस का टेबल आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि भाई प्रीफिक्सेस के टेबल में इतने जीरो हो तो ये किसके इक्विवेलेंट हो रहा है, तो देन आप लोग repeatedly लिखने से बेटर है कि आप उसको उसके इन प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट कर देंगे. इफ यू हैव a 12 zero, तो देन यू कन्वर्ट rightly only one time instead of writing the zeros many times. Okay, 10 is to the 12, which is equivalent to tera. Giga की value 10 is to the 9, mega 10 is to the 6, kilo 10 is to the 3, hectare 10 is to the 2, deca 10 की power 1, deci 10 की power minus 1, centi 10 की power minus 2, milli 10 is to the minus 3, micro 10 is to the minus 6, nano 10 is to the minus 9, and pico 10 is to the minus 12. Must keep your mind these tables on your fingertips. SI prefixes, multiples and some multiple. This is the previous table. Now prefixes are helpful. Now ऐसे यूनिट हैव एडवांटेज. इसका एडवांटेज क्या है कि आपके पास कोई लार्जर अमाउंट में आंसर है तो आप उसको मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स की सूरत में लिख सकते हैं. और ये एग्जांपल मैंने आपको दिया, अगर आपके पास मेनी टाइम्स जीरो जो है रिपीट हो रहे हैं तो देन आप लोग उसको जीरो को रिपीट करने की बजाय आप लोगों के टेबल फिंगर टिप्स पे होगा, तो आपके पास अगर 3 सिफर है तो आप लोग उसको किसके इक्विवेलेंट लिख देंगे? किलो के. क्लियर? Now, what is scientific notation? Scientific notation is a way to write a large or small value with some power of 10. Scientific जो notation है ये एक मेथड है जिसमें आप लार्जर और स्मॉलेस्ट वैल्यू को एज अ
पावर ऑफ 10 की सूरत में हम लोग लिखते हैं, ठीक है, कि आपके पास कोई भी वैल्यू है तो देन आप लोग क्या करेंगे, उसमें डेसिमल साइन ऐड अप करवा के उसको 10 की पावर की सूरत में जितने डिजिट्स आप डेसिमल को मूव करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, उतनी आप 10 की सूरत में उतने डिजिट्स की पावर के तौर पर लिख देंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग यू अ फन एग्जाम्पल. First of all, you read it. Scientific notation has a number of useful properties, is commonly used in calculators by scientists, mathematicians, and engineers. For example, if you have the answer 62750 can be expressed in the scientific notation, how is it possible? I will introduce the decimal sign. After what value? 1, 2, 3. Clear? यहाँ some mistake. ये यहाँ पे 0 आना है, ठीक है? 1, 2, 3. You can introduce the decimal after 3 digits. Okay, and you are moving from the left side. When you are moving the decimal side from right to left, so then the you can जितने digits move करवाए, you can give a power as a power of 10 is with positive sign. If I move this decimal point from 1 point ahead, so then 3 plus 1 become 4. If I want to this decimal point again some step ahead, so then 4 plus 1 it will be become 5. And answer क्या हो गया? 0.6275 into 10 raised to power 5. All these are correct, but the number that has one digit done 0 before the decimal, तमाम वैल्यूज करेक्ट हैं, बट मोस्ट एक्यूरेट आपकी अप्रोप्रिएट या अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये सही है कि कम से कम आपके पास एक डिजिट्स पीछे ही रहे डेसिमल को इंट्रोड्यूस करवाएं, ठीक है. जैसे कि अब यहाँ पे 2 डिजिट्स से के बाद डेसिमल था, बट अप्रोप्रिएट वैल्यू ये होती है कि 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दे. जितने डिजिट्स आप लोगों ने लेफ्ट साइड पे मूव करवाए हैं उतना आपकी पावर एज अ मल्टीपल एज अ पावर ऑफ 10 की सूरत में आप नेक्स्ट इंट्रोड्यूस करवाएंगे. यू कैन सी कि जितने डेसिमल में मूव करवाते गए उतनी पावर्स मैंने एज अ पावर ऑफ 10 की यहाँ पे लिख दी गई. ओके, preferably taken in the standard form. Similarly, the standard form of, अब ये देखें, point 00045. Now you can move the decimal point from the right side. First of all, I am talking about the decimal point introduced from the right to left side. Then how many digits you move, you can enter the power, you can enter the value as a power of 10. अगर 3 है तो 3, 4 है 4 with a positive sign. When you are moving, या moving the decimal point from, या introducing, not compulsory कि आपके पास यहाँ पे पॉइंट हो, समटाइम आपको खुद इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, जैसे मैंने इस एग्जांपल में करवाया है, इसी तरह मुझे यहाँ पे भी करवाना पड़ेगा. यहाँ पे तो है, इसी डेसिमल को मैंने मूव कर दिया. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे खुद इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा तो जिस तरह मैंने यहाँ पे करवाया इसी तरह मैं यहाँ पे भी करवाऊंगी. तो देन इफ यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो देन यू कैन एंटर द हाउ मेनी डिजिट्स, जितने डिजिट्स आपने मूव करवाए उतने आप एड अप करेंगे एज अ पावर ऑफ 10 की विद नेगेटिव साइड. ओके, 1 2 3 4 4 डिजिट्स we move, तो 4.5 into 10 is to power -4 सेकेंड, ठीक है, तो माइनस साइन के साथ आएगा. व्हेन यू आर मूविंग, नोट दीज टू की रूल्स for converting your answer smaller or larger. Either answer converting into the scientific notation. When you are moving from right to left, so then you can enter the values jitne digits move karwaye as a plus power of 10. When you are moving from left to right, then you can enter the power as a with the negative sign. ठीक, एक example, you can also move this decimal after 5, यानी कि it will become 45.0 into 10 is to power -4 -1, तो -5, तो वैल्यू बिकम 45.0 into 10 is to power -5. बट उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 45 into 10 is to power -4 सेकेंड. बट दिस इज द मोस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ scientific notation. Okay class, I hope you will understand this lecture. If you have any query and if any query, please ask on my personal number. Okay, it's time to saying goodbye and learn this lesson and note your these and note these headings on your book. Thank you.